Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is mixed method research, which is very much important. And today is our last lecture. So today we have two lectures. One is mixed method and research, and other one is the Likert scale. What about the importance of Likert scale? We will discuss in after this presentation. So in mixed methods research, today we will discuss what are uh, mixed methods, definition of qualitative and quantitative research, development of quantitative research, development of qualitative research, the relationship between the research process and qualitative and quantitative research. We will discuss brief history of mixed method research, why mixed method is important, categories of research design, mixed method research design, steps in conducting a mixed method study, techniques. We will discuss criteria for choosing the strategies, identifying a mixed method study, and strengths and weaknesses of mixed method. What about the challenges researchers when they use the mixed method, what kind of challenges they face. At the end we will discuss about the question answer session will be at the end of this presentation. So what is mixed method? Quantitative data can be revealed generalizable information for a large group of people. So these data often fail to provide the specific answers, reasons, explanations, or examples. On the other side, the qualitative research provides data about the meaning and context regarding the people and environments of the study. The findings are often not generalizable because of the small numbers and narrow range of participants. So both methods have strength and weaknesses. Qualitative and the quantitative have both strength and weaknesses. When used together, these methods can complement each other. So therefore, experienced researchers, they use the mixed method approach. So what is mixed method? What is mixed method? Number one is the, we can, mostly people they call the multi-method triangulation, integrated, combined quantitative and qualitative methods, multi-methodology, mixed method, mixed research, mixed method. So different people they call the different. So mixed method definition. Mixed method research is a methodology for conducting research that involves collecting, analyzing, and interpreting or mixing quantitative and qualitative research and data in a single study or a longitudinal program of inquiry. So mixed method में हम क्या करते हैं? Basically we conduct both qualitative and as well as the quantitative as well as the qualitative research in a single or longitudinal study. So the purpose of this form of research is that the both qualitative and quantitative research in combination provide a better understanding of the research problem or issue than other research approach alone. So definition of qualitative and quantitative research. The quantitative research is an inquiry approach useful for describing the trends and explaining the relationship among the variables found in the literature. So to conduct this inquiry, the investigator specifies, narrow the questions, locates or develops instruments using statistics. From the results of these analyses, the researcher interprets the data using prior predictions and research studies. So the final report presented in standard format display research objective and lack of biases. तो इसमें जो खास तौर पर क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसमें वो बताते हैं कि मोस्टली वी पीपल यूज द डिस्क्रिप्टिव एंड inferential statistics in the quantitative research based on numbers. Everyone, you people are knowing well. And on the other side, the qualitative research is an inquiry approach using for the exploring and understanding a central phenomena. इसमें हम explore करते हैं understanding के लिए central phenomena जो है उसको हम study करते हैं. To learn about this phenomena,
The inquirer asks the participants broad general questions, collects the detailed view of participants in the form of words, images, and analyze the information for description and themes. So from this data, the researcher interprets the meaning of the information, drawing on personal reflections and past research. So the structure of the final report is flexible and it display the researchers biases and thoughts. क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको पता है कि इसमें हम खास तौर पे जो मोस्टली जो प्रैक्टिस करते हैं हमारे यहाँ, जो वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इमेजेस हैं, उसका जो एनालिसिस है उसमें डिफरेंट वेज आपको पहले भी बताए हुए हैं रिसर्च डिज़ाइन का जब लेक्चर हुआ था। तो इसमें जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन भी आती है, इसमें ग्राउंडेड थ्योरी भी है, इसमें कंटेंट एनालिसिस भी है, केस स्टडी मेथड भी है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी है। तो मीन्स के हम जो क्वालिटेटिव स्टडी है जहाँ पे लोग कम हो, पॉपुलेशन जो है लो इन नंबर हो, वहाँ पे हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं। और इसमें जो है रिसर्चर जो है वो इन डेप्थली इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है फ्रॉम द रिस्पोंडेंट या फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन से। तो इसमें जो खास तौर पर वो कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल रिपोर्ट इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने एक्सपीरियंसेस अपने जो है वो एक्सप्लेन करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं, एंड इट डिस्प्लेज द रिसर्चर बायसेस एंड द थॉट्स। तो इसमें कहते हैं कि बायसनेस हो सकती है, बायसेस हो सकता है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है इसमें जो है रिसर्चर जो है वो लैक ऑफ बायस होता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आती है न्यूमेरिकली उनको वो थ्रू स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है, थ्रू स्टैटिस्टिकल जो सॉफ्टवेयर है उनके थ्रू उनके रिजल्ट जो है वो हमारे यहाँ उनको एक्सप्लेन करता है और उनकी बेसिस पे वो रिजल्ट्स और डिस्कशन और कंक्लूजन और रिकमेंडेशन देता है। तो डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। नंबर वन इज द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। हम क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है, हिस्टोरिकल जो हमारे यहाँ ट्रेंड्स हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर हम करते हैं। हम टेस्ट एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, हम मेजरमेंट टेस्ट एंड मेजरमेंट प्रैक्टिसेस हम करते हैं। और हमारे यहाँ जो है बाकायदा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्वांटिटेटिवली हम उसको लेते हैं। इसी तरह से जो हमारे यहाँ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जिसमें कोरिलेशनल प्रोसीजर है, कंपेयरिंग ग्रुप्स है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम करते हैं, हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं और उनको हम टेस्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। तो इसी तरह नेक्स्ट है कि हिस्टोरिकल ट्रेंड टेस्टिंग एंड मेजरमेंट क्या है। तो इसमें टेस्टिंग मेंटल एबिलिटीज जो है खास तौर पे लेट 90s सेंचुरीज में वो कहते हैं कि हम उस टाइम ये प्रैक्टिसेस थी। नेक्स्ट जो है ये मेजरिंग जो अचीवमेंट हैं वो आई, उसके बाद प्रिडिक्टिंग अचीवमेंट फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट जो है वो जो ये प्रीवियसली जो प्रैक्टिसेस थी टेस्टिंग द मेंटल एबिलिटीज जो है। इसी तरह से नेक्स्ट हम जाते हैं कि हिस्टोरिकल ट्रेंड जो हमारे यहाँ रिसर्च डिजाइन में था कि क्वांटिटेटिवली एजुकेशनल सर्वेज हम प्रैक्टिस अभी तक भी करते हैं। पहले भी यही होता था ट्रेंड के क्वांटिटेटिवली लोग जाते थे एजुकेशनल सर्वे करते थे, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। इसी तरह से मल्टी ग्रुप्स एंड टेस्ट हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है, बुक ऑन रिसर्च डिजाइन, ज्यादातर ये प्रैक्टिसेस अर्लियर 90s में होती थी। तो डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च में जो मेजर जो थीम्स हैं उसमें फिलोसफिकल आइडियाज, प्रोसीजरल डेवलपमेंट, एडवोकेसी प्रैक्टिसेस जो है ये ज्यादातर जो है अमल किया जाता था। क्वालिटेटिव रिसर्च फिलोसफिकल आइडियाज क्या है, न्यूट्रलिस्टिक इंक्वायरी और कंस्ट्रक्शनिज्म है। इसी तरह से नंबर सेकंड है कंसीडर द पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लिया जाता है। नंबर थर्ड है डिस्क्राइब पार्टिसिपेंट्स व्यू विद द सेटिंग और कंटेक्स्ट है। इसी तरह नंबर थर्ड है कि दिस इज एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव टू ट्रेडिशनल रिसर्च है क्वालिटेटिवली। तो नेक्स्ट है जी सेंट्रल फिनोमिना रेदर देन द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। सेंट्रल जो फिनोमिना है उसको इन डेप्थली स्टडी किया जाता है। इसी तरह नंबर नेक्स्ट है मेथड सच एज इंटरव्यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन होती हैं और उसमें जो है केस स्टडी है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, कंटेंट एनालिसिस है। इस तरह नंबर नेक्स्ट है कि डिजाइन सच केस स्टडीज, ग्राउंडेड थ्योरी एंड नैरेटिव जो प्रैक्टिस ज्यादा जो है वो क्वालिटेटिव में अर्लियर 90s में ये प्रैक्टिस की जाती थी, आज भी हैं, लेकिन आजकल जो है खास तौर पे एन वीवो सॉफ्टवेयर आ गया है जिसमें हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस उस पर किया जा सकता है। तो अब नए जो है न्यू सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे क्वांटिटेटिवली
हम डेटा को एनालिसिस करते हैं। इसी तरह अब क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है, थीमेटिक एनालिसिस है, ये अब ज्यादातर जो है मोस्ट प्रैक्टिस आजकल ये किए जा रहे हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एडवोकेसी प्रैक्टिसेस हैं क्या? वो कहते हैं द क्वालिटेटिव रिसर्चर इज नॉट ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल न्यूट्रल ऑब्जर्वर। द क्वालिटेटिव रिसर्चर इज एन ऑब्जर्वर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन है, ह्यूमन कंडीशन को जो है वो स्टडी करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं द मीनिंग ऑफ द रिसर्च इज प्लूरल, पॉलिटिकल एंड ओपन। द प्रोजेक्ट इज कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ कि ये बेसिकली यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे अबाउट द डिफरेंशिएट करेंगे रिगार्डिंग द क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है। अगर मैं कहूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में कहते हैं टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट सोशल इंटरेक्शंस हैं, टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द सोशल इंटरेक्शंस हम करते हैं। और क्वांटिटेटिव में क्या हम हमारा पर्पस क्या होता है? टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, लुक एट कॉज एंड इफेक्ट एंड मेक प्रिडिक्शंस। और ग्रुप स्टडीज की अगर हम बात की जाए तो स्मॉलर, क्वालिटेटिव की बात की जाए तो स्मॉलर एंड नॉट रैंडमली सेलेक्टेड। और अगर क्वांटिटेटिवली बात की जाए तो ग्रुप स्टडी क्या है? एट लार्ज लेवल एंड रैंडमली सेलेक्ट हम करते हैं क्वांटिटेटिवली। तो नेक्स्ट वेरिएबल्स की अगर बात की जाए वो कहते हैं स्टडी द होल नॉट वेरिएबल्स क्वालिटेटिवली। और क्वांटिटेटिवली वो कहते हैं कि स्पेसिफिक वेरिएबल्स आर स्टडीड व्हेन वी कंडक्ट द क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसी तरह से फॉर्म ऑफ डाटा कलेक्टेड क्या है? qualitatively words, images or objects. Or on the other side, quantitatively when we conduct a study on the basis of quantitative research, we rely on numbers and statistics. इसी तरह type of data जो collected है वो कहते हैं उसमें है कि qualitative data such as the open-ended responses, interviews, participant observation, field notes and reflections. और इसी तरह अगर हम जो है क्वांटिटेटिव साइड पे जाए तो वो कहते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू कलेक्ट द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, so it rely on the quantitative data based on the precise measurement using structured and validated data collection instruments, खास तौर पे जैसे क्वेश्चनएयर है और इस तरह अदर हमारे क्वांटिटेटिव जो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन डाटा लेते हैं। सो टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस इन द क्वालिटेटिव साइड आइडेंटिफाई पैटर्न्स, फीचर्स, थीम्स। थीमेटिक एनालिसिस हम करते हैं। मैं आपको एक पेपर भी भेजूंगा जिसमें थीमेटिक एनालिसिस किया जाता है। इसी तरह से नंबर क्वांटिटेटिव साइड पे जो है वो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस की जाती है वो क्या है कि जी, तो क्वांटिटेटिवली हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसको जो है अपना प्रिडिक्ट करते हैं। टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस में मैं बता रहा था कि आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, फीचर्स, थीम्स होती हैं और उसमें जो है स्टैटिस्टिकल जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें चाहे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है या उसमें अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च हम जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल्स करते हैं जिसमें काई स्क्वायर है, जिसमें जो है डिस्क्रिप्टिवली तो हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज करते हैं। और स्टैटिस्टिकली यू पीपल आर नोइंग वेल कि वी आर हैविंग अ डिफरेंट टेस्ट जिसमें खास तौर पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, उसमें अनोवा है, ठीक है, रिग्रेशन है, ठीक है। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द नेचर ऑफ स्टडी हम जो है उसको करते हैं। तो नेक्स्ट में चलता हूँ, टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस के बाद है रोल ऑफ रिसर्चर। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में खास तौर पर रोल ऑफ रिसर्चर वो है, कहते हैं रिसर्चर्स एंड देयर क्वालिटेटिव साइड पे वो कहते हैं कि द रिसर्चर एंड देयर बायसेस मे बी नोन टू पार्टिसिपेंट इन द स्टडी, द पार्टिसिपेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी नोन टू द रिसर्चर। क्योंकि रिसर्चर जो है वो इन डेप्थली जो है वो खुद इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि पार्टिसिपेंट को वो जानता होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जानता है। तो ऑन द क्वांटिटेटिव साइड द रिसर्चर्स and their biases are not known to the participant in the study, and the participant characteristics are deliberately hidden from the researcher। डबल ब्लाइंड स्टडी होती है कि जिसमें वो आगे जो है कुछ अपने रिसर्च असिस्टेंट रख सकता है जो उनको डाटा कलेक्ट करके देते हैं। इसी तरह रिजल्ट की अगर बात की जाए तो क्वालिटेटिव में कहते हैं कि पर्टिकुलर और स्पेशलाइज्ड फाइंडिंग्स दैट
is less generalizable. और क्वांटिटेटिवली कहते हैं कि जनरलाइजेबल फाइंडिंग दैट कैन बी अप्लाइड टू द अदर पॉपुलेशन। इसी तरह साइंटिफिक मेथड की बात की जाए तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी है और बॉटम अप द रिसर्चर जनरेट्स अ न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरी फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड है। और क्वांटिटेटिव की बात की जाए साइंटिफिक मेथड में वो कहते हैं कंफर्मेटरी और टॉप डाउन द रिसर्चर टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड थ्योरी विद द डाटा। और इसी तरह व्यू ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर की बात की जाए तो क्वालिटेटिव स्टडीज में वो कहते हैं कि डायनामिक सिचुएशनल एंड सोशल एंड पर्सनल होती है और इसमें जो है क्वांटिटेटिवली रेगुलर एंड प्रिडिक्ट की बात की जाती है। इसी तरह मोस्ट कॉमन रिसर्च ऑब्जेक्टिव जिसमें हम क्वालिटेटिवली हम एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो क्वांटिटेटिव साइड पे डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। जी, तो इसमें क्वालिटेटिव जो फोकस किया जाता है वाइड एंगल लेंस एग्जामिन्स द द ब्रीथ एंड डेप्थ ऑफ द फिनोमेना। क्योंकि हम डेप्थ ऑफ द फिनोमेना मींस कि हम उसको इन डेप्थली स्टडी कर रहे होते हैं। रिसर्चर दे नोइंग वेल अबाउट द इन डेप्थली फिनोमेना। और क्वांटिटेटिवली वो कहते हैं कि नैरो एंगल लेंस टेस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस हम करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में चलता हूं कि नेचर ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या है। क्वालिटेटिव में खास तौर पे स्टडी बिहेवियर इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट और जो क्वांटिटेटिव है वो कहते हैं कि स्टडी बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस कॉज एंड इफेक्ट इसमें रिलेशनशिप देखा जाता है। तो इसमें फाइनल रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो क्वालिटेटिवली कहते हैं नरेटिव रिपोर्ट विद कंटेक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंड डायरेक्ट कोटेशंस फ्रॉम द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की बात की जाती है। जो हम इंफॉर्मेशन है जिसको नरेट की शक्ल में लिखते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। और क्वांटिटेटिवली वो कहते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट विद कोरिलेशंस कंपैरिजन ऑफ द मीन्स एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी वी यूज। तो इसी तरह से नेक्स्ट में चलता हूँ और अभी जो रिमेनिंग मीटिंग टाइम है वो कोई 4-4.5 मिनट रह गए हैं। तो काइंडली आपने दोबारा आपने उसी लिंक को दोबारा आपने क्लिक करना है तो दोबारा हम कनेक्ट हो जाएंगे और फर्दर इसको कंप्लीट करेंगे। जी, तो करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो स्टेप्स क्या हैं? एवरीवन यू पीपल आर नोइंग वेल these are the major steps when we conduct study, when we conduct a research, जिसमें identifying a problem है, reviewing the literature है, specifying a purpose है, data collection है, analyze and interpret the data है, और at the end report and evaluation है। तो अगर हम compare करें about the qualitative as well as the quantitative जो research है, research in the process of research, तो quantitative characteristics हैं क्या when we are going to identify the problem? डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड्स एंड एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेशन होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव साइड की बात की जाए एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें सेंट्रल फिनोमेना को देखा जाता है। इसी तरह रिव्यूइंग द लिटरेचर की बात की जाए तो मेजर रोल और जस्टिफाई द प्रॉब्लम देखा जाता है, और इधर जो है माइनर रोल है जस्टिफाई द प्रॉब्लम देखा जाता है। स्पेसिफाई द पर्पस क्या है, स्पेसिफिक एंड नैरो। और इसमें जो है क्वालिटेटिवली वो कहते हैं जर्नल एंड ब्रॉड होता है, पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंसेस की बात की जाती है, और यहाँ पे जो है स्पेसिफिक एंड नैरो होता है, मेजरेबल और क्या है कि ऑब्जर्वेबल होता है। इसी तरह डाटा कलेक्शन की हम बात करें तो वो कहते हैं प्री डिटरमिन्ड इंस्ट्रूमेंट्स, न्यूमेरिकल डाटा लार्ज इन नंबर होता है। प्री डिटरमिन्ड इंस्ट्रूमेंट मींस कि वी पीपल नोइंग वेल कि वी विल यूज द क्वांटिटेटिव research in which we will use the questionnaire for the collection of data from the respondent। और यहाँ पे जो है क्वालिटेटिवली कहते हैं emerging the protocols and text और image the data है स्मॉल नंबर होता है क्वालिटेटिवली। और एनालाइज की बात की जाए और इंटरप्रेट की बात की जाए तो वो कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ ट्रेंड्स, कंपैरिजन, प्रेडिक्शन की बात की जाती है, और यहाँ पे टेक्स्ट एनालिसिस की बात की जाती है, डिस्क्रिप्शन है, थीमेटिक एनालिसिस है, लार्ज मीनिंग ऑफ फाइंडिंग्स की बात की जाती है। इसी तरह रिपोर्ट और एवोल्यूशन की हम बात करें वो कहते हैं स्टैंडर्ड एंड फिक्स्ड, ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइसेस होता है, अनबाइस्ड होता है। और यहाँ पे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, because researcher in depthly he is impersonally collecting the information from the respondent, and it's basically when they are going to report, when they are going to finalize their
findings. So a researcher is a flexible because in depthly he is collecting the information from the respondent. So flexible and emerging उसमें reflexive and बाइस्ड होता है, इसमें बाइसनेस उसने का आ सकती है। तो टाइम जो है बिल्कुल कम रह गया, तो मैं अभी जो है ये बंद हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट जो है नया दोबारा आप उस लिंक पे आएंगे, तो मैं फिर रिमेनिंग जो प्रेजेंटेशन है मैं आगे अगली जो मीटिंग है उसमें देना चाहता हूँ जी। क्वेश्चन अगर कोई है तो वो आप अपने पास रखेंगे और मैं आपको बाद में जो है आपके सवालों का जवाब दूंगा।